To all of you. Am I audible? So in last class, we discussed about the immediate cause of First World War, right? We were discussing the topic, basically disintegration of Ottoman Empire and the question of Balkan states, and in that we also discussed the immediate reason. Now there are some other reasons also that we need to discuss here, and this is the topic that we were discussing: factors that were responsible for the outbreak of World War First. This is the topic that we were discussing. Now, now we need to understand that, okay, a few factors we have already discussed. For example, this integration of Ottoman Empire, this integration of Ottoman Empire, we have discussed it in our last class. Question of Balkan states, it was also related to it. We have also discussed it. Question of Balkan states, we have discussed it. Okay, different powerful countries of Europe came into conflict with each other in order to conquer the disintegrated units of Ottoman Empire. Okay, and the example of Austria and Russia we have discussed, that how they come in conflict with each other. Clear? I have discussed with you what was the issue of pan-Slavism. I have already discussed with you. And when I say pan-Slavism, it means, okay, a separate country, a new country. The Serbs are demanding to carve out a new territory for themselves. That is the demand for pan-Slavism. It means Serbs were demanding to carve out, okay, a separate territory for themselves, and this demand is guided by nationalism. We all have discussed this. Here what we see, this demand is motivated by this idea of nationalism, because people were already familiar with two great examples in Europe, that is process of unification of Italy and process of unification of Germany. It was very clear. And in immediate reason, what we discussed, that Austria's Prince Ferdinand and his wife were killed by a Serb fanatic in, okay, uh, and what will happen? Austria will launch an attack on Serbia, and in this situation, who will come in support of Serbia? So Russia will come in support of Serbia. Later, what we see, that Austria is supported by Germany, and when Germany comes in support of Austria, okay, so in that case, here France will come, then Britain will come, okay. This is the group supported by Italy, but later Italy changed its side, okay, and this group was later supported by United States. That was the equation. That was the First World War. Okay, this all we have discussed in our last class. Now we are moving ahead. Okay, there are other reasons that are responsible also. This reason, okay, is related to the immediate cause of First World War. This is related to the immediate cause of First World War, which we have already discussed. Now there are other causes as well, and we need to discuss those causes. Okay, so let's discuss what are those causes. Okay, other causes. So the other causes, I will discuss some of the most important causes here with you. So first we will discuss the concepts, and in the next class we will just discuss all the concepts on the map, because first we need to, okay, discuss some ideas, and we must know
a few names and then we can go to the map portion. Okay, so here in other causes, the another important cause is, you all know about this period, that is 1870-71. Why this period is famous, this year is famous? Because the task of unification of Italy and Germany was completed. The task of unification of Italy and Germany was completed. But after this phase in Europe from 1870-71 to 1914, 1914 is the beginning of First World War. 1914 is the beginning of First World War. So between this period from 1870-71 to 1914, we see that this is the phase of new imperialism. Now this word is completely new for you, that what is new imperialism? This phase is what? The phase of new imperialism. Now this word is completely new for us. So now we need to know the meaning of this new imperialism. कि क्या है new imperialism का मतलब, right? We need to know this. Okay, so let's discuss the meaning of this word, new imperialism. Okay, right. देखो, there are two words. First I will differentiate between these two and then we will enter into the topic and we need to understand the concept. One is imperialism, that is generally known as old imperialism. One is imperialism and this we generally known as old imperialism. And there is another terminology that is known as new imperialism. So there are two concepts here, old imperialism and new imperialism. Old imperialism extends from 16th to 19th century. This is the period of old imperialism. And new imperialism is the phase that is counted after 1870-71. This is new imperialism. So what is difference between these two? Okay, new imperialism and old imperialism. तो देखो, industrial revolution came in which phase? Old imperialism or new imperialism? किस phase में? Industrial revolution. You all know about this. Industrial revolution in Britain first, and the year is 1760s. So first in Britain, and the year was 1760s, that is mid of 18th century. So industrial revolution is a significant event of 18th century. This is a significant event of 18th century. And 16th to 19th century, okay, this is the old imperialism phase. यहाँ क्या होगा? Okay, here we see that if you will combine two things, that is industrial revolution plus you will associate one more element, that is nationalism. If you will combine both these two concepts, the product will be imperialism, new imperialism. Industrial revolution plus nationalism, and here we see the product is the new imperialism. Basically this is imperialism, but here the phase, ek kaam karo, write this, industrial revolution plus nationalism, right here. Industrial revolution plus nationalism is also imperialism. Industrial revolution plus nationalism is imperialism. What does it mean? It means that industrial revolution will generate new needs. Okay, and in order to fulfill the new needs, what will happen? The powerful nations of Europe will reach to other countries of Europe. Got it? They will reach to other countries of Europe. They will explore new territories, and the geographical explorations will help in this. Sea voyages will help in this. Got it? So these all developments took place in which phase? Old imperialism. याद करो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, न्यू सी रूट्स वेर डिस्कवर्ड, there are important scientific inventions, age of exploration, geographical discoveries, end of feudalism. All these are the products of old imperialism, but they will be continued here. यहाँ भी continue होंगे, but ये emerge तो यही करता है ना, right? What we see here is that in this phase, the medieval structure was crumbling. The medieval structure was crumbling
we can say that feudalism was also crumbling. The medieval structure was crumbling. We see that feudal structure was also crumbling in this phase. We already have discussed that new scientific inventions and discoveries took place in this phase. New scientific inventions and discoveries took place. We already have discussed here that it was also a period of age of exploration. ये इसी फेज में आता है, age of exploration, right? Geographical discoveries, all this comes in the same phase. And this is the same phase where the powerful nations of Europe entered into the markets of Asian and African countries. For example, East India Company. East India Company was in India. What is the time period? 1600 to 1757. It was a trading company. It means the powerful countries of Europe are doing what? They are dominating their presence. They are entering into the markets of Asia and Africa to maximize their gains, to maximize their profit. So basically, what they are doing, they are entering into the new territories to do trade and commerce. Okay, this is what they are doing. And while doing trade and commerce, they also want to eliminate their rivals from the market. So what they are doing? They are doing trade and commerce. At the same time, what is happening? Commercial rivalry is being promoted, fighting with each other. You can take the example of India. Portuguese, Dutch fighting with each other, right? French and Dutch fighting with each other. French and English fighting with each other, and all these were the trading companies in India. So what was happening in the countries of Asia, in the countries of Africa? Since we are familiar with the example of India, we see that these different trading companies came in conflict with each other. They are trying to eliminate their trade rivals, and as a result, what is happening? Commercial rivalry is happening, right? And in the same phase, what we see, the tendency to develop these territories as colonies will also emerge. For example, India becomes a colony of Britain in which year? कब colony बनता है? 1757. Which century is this? 18th century. So we see that tendency to develop those territories where you have gone to do trade and commerce in the form of colonies. And when you will make India your own colony, what does it mean? It simply means that, okay, you have established full control over the market of India. इसका यही मतलब है. You have successfully eliminated your trade rivals from the Indian market. This is the basic meaning of this process. Got it? And which country is more ahead in this process? सबसे आगे कौन है? We see that Portugal was there, Spain was there, Dutch were there, English were there, French were there. These countries are much ahead in these processes. Okay? These countries are much ahead. But here what happens? What is the most important change here? The most important change here is that on the political map of Europe, we see the birth of new nations. This is what? Italy and Germany. And after some time, Italy and Germany, they will also start making imperialistic claims. They will also start fighting for the control over the colonies. It means what is happening in this phase? In this phase, new claimants can be seen. New claimants can be seen. And these new claimants are the new claimants for imperialistic. They are claiming to promote their imperialistic control over the countries of Asia and Africa. New claimants of power came. And they are claiming that, okay, we are controlling the territories of Asia and Africa. In this phase, what we see is that Britain is having the largest number of colonies all over the world. Largest number of colonies all over the world. We say that the sun never sets on British Empire. It means what? The British Samraj, matlab in all continents they have developed their colonies. Okay.
So this all was happening. Now Britain was on rank 1. Clear? Britain was on rank 1. The sun never sets on British Empire. This is the meaning that Britain was number 1. Now what will happen? When Germany and Italy will emerge as new powers and they will start making colonial claims, it simply means what? That the mad race will start. Colonial rivalries and conflicts will start. Okay, so what we see, that the fight for the control or possession of colonies, fight for the control and possession of the colonies will start. Fight for the control and possession of colonies will start. That mad race will start. The colonial rivalry and conflict will start. Fight for the possession over the colonies will start. Mad race will start. Okay, all this will start. And if I take an example, disintegration of Ottoman Empire, what will happen? Will it promote the colonial rivalry or not? Yes. Disintegration of Ottoman Empire is an important event of which phase? Old imperialism or new imperialism? So the answer is new imperialism. ठीक है, और ये तो सबसे important एक reason था. So we can say that in this age of new imperialism, what we see, disintegration of Ottoman Empire. This was also one of the most important thing. Disintegration of Ottoman Empire. Okay, this all was happening. And in this age of new imperialism, one most important tendency is seen, and that is what? The idea of social Darwinism is gaining popularity. In this age of new imperialism, a new tendency is seen. And what is this tendency? The tendency is the idea of social Darwinism has started gaining popularity. The idea of social Darwinism has started gaining popularity. And this social Darwinism was guided by aggressive nationalist feelings and sentiments, right? So this is also an important factor, that this idea of social Darwinism was guided by aggressive nationalist feelings and sentiments, right? Aggressive nationalist feelings and sentiments. This idea of social Darwinism is guided by aggressive nationalist feelings and sentiments. Now we have to understand both these concepts. What is the idea of social Darwinism? We all know Darwin's theory. What is Darwin's theory? Charles Darwin. Okay, survival of the races. What he writes? Survival of the fittest. Clear? This is the theory. And what is social Darwinism? When you apply Charles Darwin theory on society, the same theory is called social Darwinism. ठीक है ना? जब आप डार्विन की theory को, when you apply this theory on society, this theory is called social Darwinism. ठीक है ना? सोसाइटी पे अप्लाई कर दो तो सोशल डार्विनिज्म हो गया. एंड हाउ यूल अप्लाई ऑन सोसाइटी? सोसाइटी पे कैसे अप्लाई करोगे? देखो, when we talk about the different social classes or the races, this theory says that that social class or that race, okay, should be that race which is superior, which is fittest, okay, has the right to rule over the inferior races. Okay, they are saying that. And in this way, basically they are trying to validate the exploitative tendencies like imperialism and colonialism. कि जो रेस, जो सोशल क्लास सबसे ज़्यादा पावरफुल है, the social class which is the most powerful, okay, should survive, उसी को survive करना चाहिए. And that class should, okay, do what? Has the right to exploit the inferior classes, has the right to exploit the natural and economic resources of the poorer countries. That majority of the countries were
इन एशिया एंड अफ्रीका, उनको ये राइट मिल जाता है कि वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, मोस्ट ऑफ दीज पुअर कंट्रीज वर लोकेटेड इन एशिया एंड अफ्रीका, ओके। इट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, the powerful countries, basically the races in Europe, are trying to validate the exploitative tendencies like imperialism and colonialism. And then this theory of, or this concept of racial superiority will come to picture. प्रजातीय सर्वोच्चता, racial superiority. British races are the superior races. German races are the superior races. Okay. Italian races are the superior races. It means the countries in Europe, their citizens are claiming that हम क्या हैं, superior races. और इसीलिए हमें अधिकार मिल जाता, हमें right मिल जाता कि we can exploit the inferior races. So this concept came to picture. And don't you think that this concept is motivated by the idea of nationalism? Idea of nationalism? Yes. The people of Germany, the people of Italy, when this country will be unified, they will start claiming that we are the superior races. And possessing colonies, possessing control over the colonies will be considered as the matter of pride among the European countries. आपके पास जितना ज़्यादा कॉलोनीज है, ये आपके लिए उतने ही प्राइड और रेस्पेक्ट का विषय है। ये बिल्कुल वैसा है कि आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी कार है, जितनी बिल्डिंग है सोसाइटी में, इसको क्या किया जाता है, रेस्पेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। दैट पर्सन इज अ वेल्दी पर्सन। इन द सेम वे यूरोपियन कंट्रीज आर डेवलपिंग दिस सेंस कि अगर आपके पास ज़्यादा कॉलोनी है तो आप क्या हो, रेस्पेक्टेबल हो, पावरफुल हो, आपकी प्रेस्टीज है यूरोप में। So don't you think that it will promote the fight for control over the colonies? Yes. So this social Darwinism is guided and motivated by the nationalist feelings, and it will further promote colonial rivalries. That is the most important thing, that this social Darwinism is guided by, it is guided by nationalist feelings and sentiments. This social Darwinism is guided by the nationalist feelings and sentiments. ये nationalist feelings और sentiments से guide हो रहा है. It's guided by nationalist feelings and sentiments. And which kind of nationalism is this? Is this aggressive nationalism? क्या ये aggressive nationalism है? Yes. The nationalism which supports the belief that we are the superior races is what? Aggressive nationalism. ठीक है? So this is what? Aggressive nationalism. Aggressive nationalism. We see that this aggressive nationalism was also being promoted in Europe. ये भी बहुत तेजी से aggressive nationalism promote हो रहा है, ठीक है। Aggressive nationalism is promoted in Europe very rapidly. This is one thing. And what about industrial revolution? Second phase तक आते आते industrial revolution का expansion हो जाएगा कि नहीं? Industrial revolution started in 1760s. Now tell me that if it started in 1760s, यहाँ अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट है, दिस इज व्हाट, 19th century, what will happen? Expansion of industrial revolution in other countries of Europe. It means now industrialized France is industrialized country, right? Italy and Germany are also industrializing themselves. They are also industrialized. Now just this is a simple concept that if only Britain was industrialized, so Britain will have industrial needs. And what is that industrial needs? Need for raw material, need for new market to supply the manufactured goods. यही तो है industrial needs. Got it? But when other countries will also get industrialized, what will happen? They will have their own needs. उनको भी जरूरत होगी. They will also need what? Raw materials. They will also need market to supply the manufactured goods. In this condition, is it quite natural that the European nations will start fighting with each other, will start competing with each other? They will start fighting with each other to establish control over the territories of Asia and Africa. And why Asia and Africa only? Because countries of Asia and Africa were presenting the most favorable conditions to fulfill the industrial needs. Asia और अफ्रीका की country, they were presenting the most favorable conditions. The natural resources were okay, easily available,
and these natural resources can be used as raw materials for the industries. So in this age of new imperialism, what are the new features that we see? We see that previous features are continued, but here what will happen? Expansion of industrial revolution. The powerful countries of Europe will fight among themselves, that is commercial rivalry, to fulfill their needs, to fulfill their industrial needs. वो ऐसा करेंगे. And what about nationalist sentiments and feelings? We all know that 1789 और इसके पहले से ही क्या हो रहा है? Growth of nationalism. इटली का यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन क्यों हुआ? दैट इज ऑल्सो सिंबॉलिक ऑफ और एज अ रिजल्ट ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स. ठीक है. तो एग्रेसिव नेशनलिज्म इज ऑल्सो वन फैक्टर. एग्रेसिव नेशनलिज्म. ओके. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद, प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, process of unification of Germany, right? What is happening? Racial pride of the people is increasing. The people are becoming more and more arrogant in their attitude towards their countries. ठीक है. जैसे अगर आपके मन में ये भाव आए कि कहीं कोई पाकिस्तानी दिख जाए तो आपको लगे कि अरे यार मैं इसका खून पी जाऊंगा, इसका मतलब आप बीमार हो, आप नेशनलिस्ट नहीं हो, आपके ऊपर क्या हावी हो गया है? Aggressive nationalism. Do you understand? Okay. So this was happening at that time. ठीक है. Aggressive nationalism. The people are becoming more and more arrogant towards, okay, their pride of the nation. Aggressive nationalism promoter है. तो इसका भी एक important role है and you must know it. I hope this factor you understood. Okay, you can write, summarize. How you can summarize that 1870 onwards was the phase of new imperialism. Okay, colonial rivalry was increasing due to the expansion of industrial revolution. और क्या हुआ इस फेज में? Nationalist feelings and sentiments, okay, they are getting more and more aggressive. The people are becoming more arrogant in their attitude towards the pride of their nation. ठीक है, that is aggressive nationalism. And this aggressive nationalism will do what? Okay, will prepare the fertile ground for the war. देखो मीडिया वाले कैसे दिखलाते हैं, लगता है अभी वॉर होने ही वाला है, सुबह से शाम तक न्यूज़ ऐसा दिखा देंगे कि देख लोगे तो सर दर्द की दवा खानी पड़ेगी. तो ऐसा करेंगे जैसे सुबह वॉर हो जाएगा, तुम सो के उठोगे तो लगेगा अब थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है. ठीक है. ओके. तो दिस इज नॉट गुड. एग्रेसिव नेशनलिज्म इज नॉट गुड. नाउ देर इज वन मोर फैक्टर. समझ गए आप इसको? ओके. नाउ देर इज वन मोर फैक्टर and write this, that is also very important, right? Factor number 3. And factor number 3 is rise of militarism in Europe. Rise of militarism in Europe. And that factor is very interesting. Rise of militarism in Europe. We need to understand what is that. Rise of militarism in Europe. देखो, main causes of First World War. Okay. After 1870s, what happened? After 1870s, we see a new tendency. We see a new tendency. नहीं, new tendency नहीं कह सकते. ठीक है, read this. This tendency becomes popular. This tendency becomes more popular. After 1870, a tendency becomes more popular. And what is the tendency? तो देखो, conscription system. Write this, conscription system. Conscription system. This is an important factor that is responsible for the growth of militarism in Europe. Conscription system. Conscription system क्या होता है? In any country, if there is compulsory enlistment of people in national service, that is military service, that is conscription system. जैसे किसी भी कंट्री में अगर ये कंपलसरी कर दिया जाए कि आपको मिलिट्री में 2 इयर्स तक, 3 इयर्स तक या 5 इयर्स तक अपनी सर्विस देनी ही देनी है, तो इस सिस्टम को क्या कहा जाएगा? कॉन्स्क्रिप्शन सिस्टम. मेरी बात समझ गया ना? जैसे इजराइल में भी आप देखते हो कि द पीपल जस्ट गिव देयर सर्विसेज टू द, ओके, द मिलिट्री सर्विसेज दे डू. So in the same way, conscription system means, right, compulsory. Read this, compulsory. Conscription system means compulsory
enlistment of people in the military services. Compulsory enlistment of people in military services. Compulsory enlistment of people in military services is conscription system. ठीक है ना? बताओ, if there will be aggressive nationalism, so what will happen? If there are situations or threats of war, is it a possibility that the nations will bring this conscription system in practice? That's a possibility. देखो, in France, write this. In France, this system was already there from 1789. France में 1789 से ही था. In Austria, Austria-Hungary, in Austria-Hungarian Empire, this system was already in practice from 1868. Okay. In Germany, this conscription system was introduced in 1870-71. In Italy, this conscription system was introduced in 1870-71. In Russia, this conscription system was introduced in the year 1874. सभी कंट्रीज में conscription system है, यानी कि इनके सिटीजन्स क्या करते हैं? कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज टू सम ईयर्स, स्पेसिफाइड ईयर्स. इट मे डिफर. ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 4 ईयर, वट एवर बी द, you can say that condition here, you will provide military services, give your services to the nation. Only one country had not introduced conscription system. केवल एक कंट्री ने conscription system नहीं लाया था. कौन सी कंट्री हो सकती है? Can you make a guess? Only one country. Exactly. ब्रिटेन को अपने बच्चों को कहाँ भेजना था? इंडिया में. EIC ऑफिशियल्स बना के ट्रेड एंड कॉमर्स करना था. बाकी लोग लड़ाई झगड़े के चक्कर में लगे हुए थे. ब्रिटेन की पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडिड आइसोलेशन. ये पता है आपको? ओके. तो ओनली ग्रेट ब्रिटेन वाज द कंट्री वेयर देयर वाज नो कॉन्स्क्रिप्शन सिस्टम. कोई कॉन्स्क्रिप्शन सिस्टम नहीं था. और ये दोनों नन्हे मुन्ने बच्चों का क्या हाल है? जर्मनी एंड इटली 1870-71 बनते ही क्या किया? दे इंट्रोड्यूस कॉन्स्क्रिप्शन सिस्टम. इट शोज दैट देयर इज द रोल ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म हियर. एग्रेसिव नेशनलिज्म है. ठीक है, गॉट इट. नाउ अब ये बताओ कि ऑल दीज इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन यूरोप आर हैविंग कॉन्स्क्रिप्शन सिस्टम. मान लो सपोज वी आर द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री and in our country there is conscription system, so we will join military for 3 or 5 years. Once you join military for 3 or 5 years, your outlook will be changed or not? आपने देखा मिलिट्री से रिटायर्ड जो लोग होते हैं उनके अलग अलग ही तेवर होता है. वो कहते हैं अपना बैलेंस अप्रोच अपने पास रखो, हमारा अप्रोच ये है. मेरी बात समझ गया? तो दैट विल हैपन. एग्रेसिव नेशनलिज्म प्लस कॉन्स्क्रिप्शन सिस्टम प्लस which theory is being promoted? social darwinism. इसने लोगों को इतना मतलब अपनी नेशन के प्रति प्राइड और ऐसा बना दिया है कि पीपल सेड दैट जब भी कुछ होता है पीपल से वी वांट वॉर. युद्ध चाहिए हमें, हमें लड़ना है. वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ आवर सेल्फ रेस्पेक्ट. हमें युद्ध चाहिए ही चाहिए. बट जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है उसके बाद वॉर का नाम सुनते ही लोग रोने लगते हैं, कहते अब नहीं चाहिए, बहुत हो गया. राइट? तो अभी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं है, लोगों के अंदर जोश पूरा है. कॉन्स्क्रिप्शन सिस्टम, एग्रेसिव मिलिट्रिज्म और प्राइड नेशनलिज्म. उधर कॉलोनी पे कंट्रोल हो रहा है तो उसको भी अच्छा माना जा रहा है. तो लोगों का वो क्या है? वी वांट वॉर. मेरी बात समझ गया ना? वी वांट वॉर, हमें वॉर चाहिए. लोग बड़े जोश में है क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वर्ल्ड वॉर होगा तो क्या होगा. किसी को पता नहीं था कि वर्ल्ड वॉर जैसी चीज कुछ हो सकती है. बट इस जोश की वजह से आगे क्या होने वाला है ये देखो, कितनी तबाही मचने वाली है. राइट? ओके. लोग तुरंत आ जाते थे, अपने रूलर से कहते थे चलो वॉर करो. रूलर को अपनी कुर्सी बचानी थी, वो वॉर करना पड़ता था उसे. ठीक है, तो ये मामला था. कॉलोनियल राइवलरी, कॉन्स्क्रिप्शन सिस्टम, एग्रेसिव नेशनलिज्म. ठीक है, इन सब ने मिलकर क्या करा दिया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट रीजन क्या था? यू ऑल नो. फ्रांस फर्डिनेंड एंड हिज वाइफ वर किल्ड बाय अ सर्बियन नेशनलिस्ट. तो ऑस्ट्रिया के लोग क्या कहेंगे? व्हाट द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया विल डिमांड? We want revenge. We want revenge. Revenge किससे लेना है?
सर्बिया से, तो ऑस्ट्रिया विल इन्वेड सर्बिया. नाउ रशियन पीपल विल से व्हाट? ओके, we cannot compromise at this situation. Okay, we claim Serbia. Okay, we want Serbia. How Austria can attack on Serbia? सर्बिया तो हमें लेना है, चलो सर्बिया को बचाने चलो. What will happen? रशिया will interfere. मेरी बात समझ गए? रशिया के इंटरफेयर करते करते क्या होगा? फ्रांस की कहानी पता है आपको, बता चुका हूं. इट वॉज आइसोलेटेड इन यूरोप फॉर मोर देन 20 years. डिप्लोमेसी ऑफ बिस्मार्क. फ्रांस को दो दोस्त मिल गए थे, ब्रिटेन और रशिया. रशिया किससे वॉर कर रहा है? ऑस्ट्रिया से. ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में कौन आता है? जर्मनी. और फ्रांस का दुश्मन नंबर 1 कौन है? दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, वही वाला चल रहा है सीन. फ्रांस मौके के इंतजार में है और मौका मिल गया. तो फ्रांस विल सपोर्ट विच कंट्री? रशिया. एंड फाइनली ब्रिटेन विल कम इन सपोर्ट ऑफ फ्रांस. ब्रिटेन को आना ही पड़ेगा क्योंकि उसे पता है पहले से. जर्मनी में कैजर विलियम टू की मिस्टेक्स आपको पता है. जर्मनी वॉज पावरफुल. जर्मनी ने अपनी पूरे यूरोप में जो सेकेंड मोस्ट पावरफुल नेवी थी वो किसकी हो चुकी थी? जर्मनी की. So in this way what we see that different group of nations came in a situation of conflict with each other, and in this way we see the outbreak of First World War. And this First World War was a prolonged war. It continued from 1914 to 1918. Okay, a question लिखो, write a question and you will try to write the answer in 150 words only. ठीक है? 4 इश्यूज और हेडलाइंस को लिखना, अननेसेसरी चीजों को इंक्लूड नहीं करना. कोर इश्यूज को लिखना. एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. द क्वेश्चन इज दिस, राइट, डिस्कस द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट वर responsible for the outbreak of First World War. Discuss the important factors that were responsible for the outbreak of First World War. ठीक है? If I say that without entering into the story part, tell me what are the important factors. One liners की तरह अगर आपको बताना हो तो what you will say? What are the important factors? Okay, बताइए. Exactly, ऐसे ही की पॉइंट्स एग्जाम में लिखना है. Got it? I discuss this much इतना क्यों बताता हूँ कि when you understand the story you can write the key point. Otherwise आपको वो की पॉइंट्स रटना पड़ेगा और आप एग्जाम में पक्का भूल जाओगे. Got it? जैसे what is the first point? Very good point. Disintegration of Ottoman Empire and the question of Balkan states. Conflict between different European countries on the question of Balkan states. ये हो गया point 1. Second point will be what? दूसरा point क्या होगा? Just give the answer. रवि, सिर्फ सुनना नहीं है, बोलना भी है. अब बताओ सेकेंड पॉइंट, तुम बताओ. व्हाट विल बी द आंसर? सेकेंड पॉइंट वो लास्ट में बताना. देखो आंसर आपका वेल स्ट्रक्चर्ड कैसे होगा. फर्स्ट डिस्कस द अदर फैक्टर्स एंड इन लास्ट यू विल डिस्कस इमीडिएट फैक्टर एंड यू विल ड्रॉ अ स्केच दैट विच नेशंस फॉट ऑन विच साइड. ठीक है, ऐसे बताना है. तो सेकेंड बताओ, इतने सारे पॉइंट है. यू कैन राइट दैट फेज ऑफ न्यू इंपीरियलिज्म, है ना, and expansion of industrial revolution, increase in colonial rivalry, commercial rivalry and conflict. ये भी तो हो सकता है ना. Will this be one factor? लिख दोगे. फिर what will be the third? Aggressive, very good. Aggressive nationalism. This will be the third factor. Aggressive nationalism, third factor. Fourth factor क्या हो सकता है? Conscription system लिख सकते हैं हम. Aggressive militarism, growing militarism in Europe and conscription system. Can it be one reason? Growing militarism in Europe and conscription system. Exception, what is the exception of conscription system? Britain. ठीक है, this can be one factor. दूसरा क्या हो सकता है? Can we say that after Bismarck, mistakes of ruler of Germany, Kaiser William II, क्या ये एक रीजन है? Yes. बिस्मार्क जब तक जिंदा था, जो मैंने क्लास में बताया था, 1871 to 1890, peace was maintained in Europe. But when Kaiser William II came, what happened?
He could not understand the logic of Bismarck's foreign policy. He committed few mistakes which ultimately the entire world will have to pay the cost of this. ठीक है, तो ये बात समझ में आई ना कि mistakes committed by Kaiser William II, the ruler of Germany, because he failed to understand the diplomatic essence of Bismarck's policy. वो समझ नहीं पाया बिस्मार्क की पॉलिसी के डिप्लोमेटिक एसेंस को. ठीक है, 4 और 5 फैक्टर्स हो गए, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट लास्टली वी कैन राइट वन पॉइंट, दैट इज इमीडिएट रीजन. जरूरत से ज्यादा लिख भी नहीं सकते, गॉट इट, बिकॉज वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स ओनली. so lastly we will write about the what immediate reason. what is the immediate reason? in short कैसे define करोगे immediate reason को? tell me what will be the point. don't write the full sentence, write the okay key issue. what will be the immediate reason? very good, very good, very good, very good. killing of Austrian Prince Ferdinand. अगर नाम नहीं याद आ रहा है तो ऑस्ट्रियन प्रिंस लिख के छोड़ दो, बाई अ सर्ब नेशनलिस्ट. ठीक है, दिस इज द इमीडिएट रीजन, इतना ही बताना है. देन यू विल डू व्हाट, यू विल ड्रॉ अ स्केच कि कौन कौन से नेशंस किस तरफ थे. और आपको एक ट्रिक पता है, पहले बता चुका हूँ. ओके, देयर इज अ गर्ल नेम्ड जिया, बॉयफ्रेंड इज रशिया. ठीक है, जिया में से आई विल ज्वाइन विच ग्रुप, आई इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा. लेटर ज्वाइंस दिस ग्रुप. ओके, G for Germany, A for Austria. Italy joins this group. This is Britain, this is France, this is Russia. But Germany was very powerful. जर्मनी ने हालत खराब कर दी थी सबकी. ब्रिटेन परेशान था, रशिया परेशान था. ठीक है, रशिया विल हैव टू सरेंडर, रशिया को तो सरेंडर करना पड़ जाएगा. What Germany will do, Germany will invade Russia. Germany will invade Russia, and in 1917 Russia will surrender some of its territory to Germany. Russia will surrender some of its territories to Germany. कहेगा भाई मेरे को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर जाना है, मैं लड़ना ही नहीं चाहता, मेरी टेरिटरी तुम अपने पास रख लो, मुझे बस जाने दो. ठीक है, तो रशिया विल सरेंडर सम ऑफ इट्स टेरिटरीज टू जर्मनी एंड विल कम आउट ऑफ द वॉर. और 1917 में रशिया में क्या है, रशियन रिवॉल्यूशन, राइट. And this treaty is known as Treaty of Brest-Litovsk. This treaty is known as Treaty of Brest-Litovsk. It was signed between Germany and Russia. Okay, Treaty of Brest-Litovsk. It was signed between Germany and Austria. Treaty of Brest-Litovsk. फिर से याद रखना, वर्ल्ड वॉर के बीच में से कौन निकल के भाग गया, रशिया. झगड़ा शुरू किसने किया था, इसलिए किसी के पीछे पीछे मत जाना, पहले ही भाग लेगा वो. ओके, याद आया, ऑस्ट्रिया इन्वेडेड रशिया, सॉरी सर्बिया, एंड हु केम इन सपोर्ट ऑफ सर्बिया, रशिया. रशिया के पीछे पीछे कौन आया, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, और फिर रशिया ही फील्ड से बाहर चला गया. व्हाट इट, रशिया क्विट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1917, 17 में ही क्विट कर दिया. And in Russia, the reason I will discuss in the topic Russian Revolution, the reason is Russian Revolution. Okay, Russia quit the war in 1917. जर्मनी की हालत ये थी कि it was just continuously getting edge on the other countries, rival countries, continuously. Okay, and Germany also launched attack on US. जर्मनी ने साथ ही साथ यूएस शिप्स पे भी अटैक कर दिया, यूएस शिप्स पे भी अटैक कर दिया. ओके, एंड द पॉलिसी ऑफ जर्मनी हियर इज नोन एज पॉलिसी ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर. इस पॉलिसी को क्या कहते हैं, पॉलिसी ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर. ठीक है, जर्मनी इन्वेडेड यूएस शिप्स ऑल्सो, दैट इज व्हाट, पॉलिसी ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर. अच्छा, यूएस का क्या अप्रोच था पहले, यूएस वाज न्यूट्रल इन दिस वॉर. previously what we see, read this, previously US was neutral in this war. Previously US was neutral in this war. US neutral था, बट एक प्रॉब्लम थी, वो बात आपको समझना पड़ेगा. US was neutral. US announced that I am neutral in this war, but
the population of United States. When you read about United States and theory of independence, sorry, uh, independence movement in United States, you will come to know that देखो US as a country क्या है? Country of migrants. People from different European countries came and settled in US, and in this way, okay, a culture, a country developed, that is United States. So if different cultures people will come, different countries people come and settle in Europe, so US will promote what? Multiculturalism, सेकुलरिज्म, इसको वो प्रमोट करेगा क्योंकि वहां पे किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन और कल्चर के लोग नहीं है, अलग अलग जगह से लोग आके बसे हुए थे. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ यूएस बाई कोलंबस, यूएस को किसने ढूंढा था? कोलंबस ने. Okay, so the locals of US were not very dominant. There was a small population, and the people in European countries thought that US में हम जाके सेटल हो सकते हैं. ठीक है, जिनके ऊपर केस वेस चल रहा था ब्रिटेन में, क्रिमिनल थे, उन्होंने कहा पहले निकल लो, वहीं चल के ट्रेड एंड कॉमर्स करेंगे. सारे स्मगलर्स कहाँ जाके शिफ्ट हो गए? यूएस में. जिनको ट्रेड एंड कॉमर्स का प्रोस्पेक्ट दिखा वो भी कहाँ जाके शिफ्ट हो गए? यूएस में. ओके, so the population was a mixed population, but among this mixed population, majority of the population was of British origin. ये भी याद रखना है. जैसे मिक्स्ड पॉपुलेशन में भी सबसे ज्यादा कहाँ के लोग आके सेटल हुए थे? यूएस में, ब्रिटेन के. इट मीन्स ब्रिटिश ओरिजिन पीपल वेर इन लार्जेस्ट नंबर्स इन यूनाइटेड स्टेट. यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज्यादा ब्रिटेन के लोग थे. एंड यूएस वाज प्रीवियसली अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. यूएस ब्रिटेन की कॉलोनी भी था. यू ऑल नो दिस, दैट व्हेन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट, तो यूएस वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी. यूएस एक ब्रिटिश कॉलोनी भी था. ये बात आपको समझ में आई? तो अब ये बताओ कि अगर अमेरिका के पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा ब्रिटेन के लोग आके सेटल हुए हैं, और ब्रिटेन जब किसी संकट में होगा, किसी क्राइसिस में होगा, तो बताओ मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ यूएस विल सपोर्ट विच कंट्री? ब्रिटेन, ड्यू टू देयर कल्चरल एफिनिटी. गॉट इट? So the US government said that we will remain neutral in this war, and the people were saying that support Britain. ब्रिटेन को क्या करो? सपोर्ट करो. But US was somehow managing, the government was somehow managing. But when Germany followed the policy of unrestricted warfare, किसी को नहीं छोड़ेगा ये, unrestricted, ठीक है, policy of unrestricted warfare, it will attack US ships also. Okay, so what will happen? Obviously US will react. एक event है, that event is there was a ship Louisiana, that was a British ship, and Germany did what? कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहा था? अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर. अटैक कर दिया ल्यूजियाना शिप पे, उसको डुबा दिया. एंड देयर वर 1201 पैसेंजर्स ऑन दैट शिप. 1201, almost 1200 passengers were there on the ship. So don't you think that US will react? Yes, US will react. इसके अलावा भी कई सारे पैसेंजर शिप पे अटैक किया जर्मनी ने. And the people in United States were already demanding that the government should support which country? Britain. समझ में आ रहा है? स्टोरी समझ में आ रहा है? अब इसके बाद क्या होगा? यूएस गवर्नमेंट विल से व्हाट? कि पहले तो हम ब्रिटेन की ही कॉलोनी थे, वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. हमने अपना इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो लड़ा वो किससे लड़ा? ब्रिटेन से लड़ा. एंड ब्रिटेन स्टिल हैज कॉलोनाइज्ड हंड्रेड्स ऑफ अदर कंट्रीज. ब्रिटेन के पास हंड्रेड्स ऑफ कॉलोनीज हैं. तो इफ वी विल स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ ब्रिटेन, व्हाट विल हैपन? इंटायर वर्ल्ड विल क्रिटिसाइज अस. पूरी दुनिया हमें क्रिटिसाइज करेगी. यू फॉट विथ ब्रिटेन and you say that we oppose colonialism, we oppose imperialism, and still you are supporting Britain. So US will ask the government of Britain, US government will ask the government of Britain that we are ready to give you support, but promise us. What are the promise that US government is asking? US government said that promise us that once the war will be over and the war result will be in your favor,
So you will give the right to self determination for the people who are living in your colonies. अपनी कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए क्या दोगे? राइट टू सेल्फ determination. Got it? This was the demand of US. And then US did what? Then US supported Britain in First World War. Got it? So once First World War will be over, US will mount pressure on the Great Britain कि कॉलोनी में रहने वाले लोगों को कौन सा राइट दो? राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन. गांधी जी पता था ये बात. गांधी in India, we were fighting Indian War of Independence. First World War ended in which year? 1918. And non-cooperation movement started in which year? 1920. And what was the objective of first great mass movement in India? ऑब्जेक्टिव क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का? अगर आपको पता हो, ऑब्जेक्टिव था स्वराज. एंड स्वराज मीन्स व्हाट? स्वराज, सेल्फ रूल. Indians have the right to determine about their future. They will decide that how they will be ruled. We will handle all administrative activities. यही था ना ऑब्जेक्टिव. इंडिया में पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सिस्टम, लेजिस्लेशन सब कुछ कौन देखेगा? इंडियंस देखेंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश, बट द इंटायर स्ट्रक्चर विल बी ऑपरेटेड बाय द इंडियंस. तो गांधी का ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में स्वराज का डिमांड था, was it inspired and motivated by the international factors? Yes or no? Yes. So all the decisions that Gandhi took in Indian national movement were guided by the international factors. अगर गांधी ने बात की पीस की, नॉन वायलेंस की, तो इट वाज गाइडेड बाय इंटरनेशनल फैक्टर्स. First phase of revolutionary activities failed, second phase of revolutionary activities failed, and lastly the revolutionaries accepted that we will have to organize and launch a mass movement in order to end the colonial empire in India, which Gandhi was advocating from the very beginning. गांधी बहुत पहले से ये बात कह रहे थे. मेरी बात समझ गया ना? तो गांधी क्यों कह रहे थे नॉन वायलेंस? बिकॉज देयर वेर एग्जाम्पल्स of other countries which were colonies where the people force get their rights accepted. लोगों ने क्या किया? वायलेंस, फोर्स, हिंसा का प्रयोग किया. एंड व्हाट द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड? Colonial government suppressed these movements mercilessly, brutally, and hundreds and thousands of people were killed. And Gandhi was knowing this, that if we will use violence, what will happen? Thousands and lakhs of innocent Indians, people were killed, their lives will be destroyed, because British government will do the same which it has done in other countries of Asia and Africa. There is an example of Congo in Africa that was ruled by the ruler of Belgium. That context I will discuss in the chapter decolonization. And in that situation, you will come to know that why Gandhi was having such approach. When you will read about how Dutch were ruling Indonesia, when you read about how French were ruling their colonies, then you will realize the importance of Gandhian ideas, that why Gandhi believed in negotiating, why Gandhi followed the struggle truce struggle approach. Got it? So here in non-cooperation movement, the objective of the movement, that is Swaraj, is guided and motivated by the international factor. And what is that international factor? That US was mounting pressure on the Britain ki once the world war will be over, will have to grant rights of self-determination to the people who are living in the colonies. And on this condition, US will provide support to Great Britain. And finally, the war results will come in the favor of Great Britain. Got it? So US support was game changing. अगर US ने सपोर्ट नहीं किया होता तो वर्ल्ड ऑर्डर कुछ और ही होता. Got it? So US support was game changer event. So here what we see is that Britain, France and Russia are supported by US. And later Russia quits First World War. Russia quits First World War. Okay? And Italy did what? Italy changed side in this war.
इटली चेंज्ड साइड इन दिस वॉर। अब आपको हमेशा याद रखना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉट बिटवीन टू ग्रुप ऑफ नेशंस। एक ग्रुप, ट्रिक आपको पता है, GIA BFR, आई चेंज द साइड, BFR सपोर्टेड बाय द US and R quit the first world war, okay, in 1917. There are other countries also, for example Turkey. टर्की किसके साइड से फाइट कर रहा है, कहानी आपको पता है, ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। रवि, टर्की फाइटिंग विथ, टर्की किसके साथ फाइट कर रहा है? आंसर इज वेरी सिंपल, ब्रिटेन। बताया तो था कल, ठीक है, खिलाफत और इन सब से जोड़ के बताया था ना। ओके, सो देयर आर अदर कंट्रीज आल्सो, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज। इज इट क्लियर? नाउ हैव यू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? अब ऑटोमन एम्पायर, अब देखो ऑटोमन एम्पायर का पूरा कॉन्सेप्ट मत लिख देना आंसर में। ये नहीं कि सब आपने बताना शुरू कर दिया, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, नहीं। वो मैंने इसलिए बताया था सो दैट यू कुड रिलेट द कॉन्सेप्ट, यू कुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हैव यू गॉट माय आइडिया? इन एग्जाम you will simply write disintegration of Ottoman state, okay, Balkan states, conflict over these states between the powerful countries of Europe, example of this conflict Austria and Russia। इतना एग्जाम में लिखोगे, एग्जामिनर समझ जाएगा। गॉट इट? समझ में आया कि नहीं? नाउ वन मोर थिंग, and that is very important, write this, impact of first world war, impact of first world, impact, नहीं, it was with British side ना, or sorry, rival party of Britain, yes, Turkey was against with the rival party of Britain na, that's why Britain will do what, Britain will, okay, impose some conditions on Turkey। ये बताया था मैंने आपको, end of caliphate rule and all this। is it clear? now impact, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, impact and significance डिफरेंस क्या होता है, बताओ क्या डिफरेंस होता है? बाकी लोग भी जिन्होंने वीडियो नहीं ऑन किया, आप भी बोल सकते हो, ठीक है। impact and significance, what is the difference between impact and significance? अच्छा, आपने कॉलेज वगैरह में जब एग्जाम दिए होंगे तो उसमें जो क्वेश्चन आता है उसमें सीधा सीधा पूछ लेते, डिस्कस इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दोनों वर्ड एक साथ दे देते हैं, वहां तो प्रॉब्लम है नहीं। इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस क्या है? देखो बेसिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट देम कंप्लीटली, दोनों को कंप्लीटली सेग्रीगेट नहीं कर सकते। इम्पैक्ट, जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट इम्पैक्ट, सो मोमेंटरी इफेक्ट की हम बात करते हैं, दैट इज इम्पैक्ट, momentary effect। And when we talk about significance, so here we talk about long term effect, plus here we also have to discuss significant for whom, ये सबसे पहले हमें बताना होता है। सिग्निफिकेंस में सिग्निफिकेंस फॉर होम, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट दैट सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ पलासी इन मॉडर्न इंडिया, तो बैटल ऑफ पलासी वॉज सिग्निफिकेंट फॉर होम, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस में क्या बताना पड़ेगा, इट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर होम। गॉट इट? समझ गया ना? नाउ इम्पैक्ट, सपोज दिस इज इम्पैक्ट, सो व्हाट इज सिग्निफिकेंस, दिस इज सिग्निफिकेंस। इज इट क्लियर? लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज विल इंक्लूड मोमेंटरी इफेक्ट, ठीक है। तो एग्जाम में जब आए तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, जितना आपको याद आ जाए उतना लिख के चले आओ, उतना भी लिखना मुश्किल होता है, ठीक है। वो सारी टेक्निकलिटी कोचिंग तक ही होती है। when you will sit in exam for 3 hours, then again for 3 hours, and there are different questions from different modules and you have limited time to write, okay, तो लिखना, writing is the first most important challenge, ठीक है ना। तो now we are discussing the impact में क्या होगा, for example if I say that this is war, so obviously we can divide the impact into different parts, for example social impact कर सकते हैं, right, इकोनॉमिक इम्पैक्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल इम्पैक्ट कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ओके, इन दिस वे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एक्सेट्रा। नाउ व्हाट विल बी द सोशल इम्पैक्ट ऑफ वॉर, दिस वी कैन इजीली गेस, कोई भी वॉर हो उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा। देखो वॉर में क्या होगा, लॉस ऑफ लाइफ्स,
Okay, thousands of people will be disabled, will be crippled, thousands, lakhs of people will die, and this will disturb the entire social system. Social system will be disturbed or not? Social structure will be disturbed or not? Yes. This is the year 1914 to 18, and the society was patriarchal. Yes or no? Yes. Who was the sole bread earners in the family, male or female? Male members of the society. Who will fight war, male or female? At that time society was patriarchal, male. So who will die? Male will die. So in this situation, what will happen? The sex ratio, male female ratio, will be disturbed or not? Will it be disturbed? Yes. Now if the male member of the family who is earning will die in war, so who will have to take care of the family, of the children? Women. So what will happen? Women will come out from these domestic boundaries, domestic, you can say that, confinements, in large numbers. It means what will happen? The role of women in the economic activities, the role of women, okay, will become more prominent. ये होगा कि नहीं? Okay, so this will happen. This is the impact on society. So write point 1. Okay, millions of people will lost their life, thousands and lakhs will be disabled, lakhs will be disabled. Okay, right, next point, social structure will be affected. और एग्जाम में जितने शॉर्ट पॉइंट्स बना सकते हो ना, उतना शॉर्ट पॉइंट बनाना. शेक्सपियर या शशि थरूर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? Got it? Social structure will be disturbed. Right, next point, male female ratio will be affected. Male female ratio will be affected. Patriarchy will decline. Patriarchy will decline. Patriarchy will decline. Patriarchy will decline. Next point. Okay, role of women in or participation of women in economic activities will increase as a result. As a result हटा दो, क्यों 3 वर्ड बढ़ा दें उसमें अच्छा इंग्लिश लिखने के लिए, ठीक है? पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन विल इंक्रीज. देखो, फॉर योर एग्जाम आई ऑलवेज मेक इट क्लियर, मैं बार बार ये चीज आप लोगों को क्लास में दोहराता रहता हूँ, दैट फॉर टीचर साइड ऑल्सो एंड फॉर फ्रॉम स्टूडेंट साइड ऑल्सो, इफ एज अ टीचर आई विल स्पीक वेरी धमाकेदार इंग्लिश, ठीक है, जो 5 मिनट बाद आपको समझ में आ रहा है पता नहीं क्या बोल गया मैं, इसका मतलब मैंने रट्टा मारा है, राइट? और वही मैं आपको भी सिखा रहा हूँ, दैट विल नॉट वर्क. गॉट इट? यू विल हैव टू डू व्हाट? ब्रेक द आइडियाज. आइडियाज को ब्रेक करो, सिंपल इंग्लिश बनाओ, तोड़ो उसको, छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करो, बहुत सारे पॉइंट्स फ्रेम करो और लिखो, एंड यू विल फाइंड दैट यू आर गेटिंग एक्सलेंट मार्क्स इन यूपीएससी. ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं. नाउ द सेकेंड इम्पैक्ट इज, राइट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट. व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट? इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये भी हम आसानी से गेस कर सकते हैं. व्हाट विल हैपन? वॉर विल इन्वॉल्व व्हाट? मिलिट्री एक्सपेंसेस. ओके, एंड दिस, द वॉर इज व्हाट? प्रोलॉन्ग्ड वॉर, लंबे समय तक चलने वाला वॉर है, अबाउट 4 years. So what will be the effect on the economies of these nations? Okay, economic crisis, this will happen. So write this point, that okay, prolonged war and military expenses will bring, prolonged war and military expenses in this war will bring the participating nations in a state of economic crisis, will bring the participating nations in a state of economic crisis, in a state of economic crisis. And what is economic crisis like situation? और कुछ points हम बना सकते हैं. Now tell me, the war will disrupt trade and commerce or not? Yes or no? So write this, disruption of trade and commerce. Disruption of trade and commerce. Acha, when disruption of trade and commerce will happen, what will happen? Will there be lack of essential goods and commodities? Yes or no? Yes. So write this, disruption of trade and commerce. Next point is lack of essential goods and commodities. Lack of essential goods and commodities. Disruption of trade and commerce. Next point is lack of essential goods and commodities. Okay. Lack of essential goods and
commodities. Okay, scarcity. Now tell me one thing. Okay, what about inflation? When lack of essential goods and commodities, so what will happen? Inflationary pressure. Write this. Inflationary pressure. This will be one challenge. Inflationary pressure. Inflationary pressure. What about the purchasing power of the people? It will be reduced or not? Yes. So write this. Purchasing power will be reduced. Purchasing power will be reduced. Purchasing power will be reduced. Now the next point. What will happen in war? Physical infrastructure will get damaged or not? यूक्रेन वॉर का देख लो वीडियो उठा के, ठीक है. इसराइल फिलिस्तीन देख लो, हॉस्पिटल्स आर डैमेज्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज आर डैमेज्ड, बिल्डिंग्स आर डैमेज्ड, डैम्स आर डैमेज्ड. So when physical infrastructure will damage, what will happen? Will there be decline in economic activities? Yes or no? So economic prosperity will decline or not? Yes. So read this. Disruption of physical infrastructure. Disruption of physical infrastructure. Disruption of physical infrastructure. एरो मार्क दे के सामने लिख लेना. डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. डिक्लाइन इन disruption of physical infrastructure, decline in economic activities. And write one more point, that is, okay, decline decline in economic activities, decline in economic prosperity, right? And one more thing. Now dekho, when we discuss the results of the war, one group of country is what? Victorious country, and the another group of countries the defeated nations. So according to the law of that time, what will happen? Will the defeated nations pay the compensation to the victorious nations? Yes. किसके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा? That you are responsible for the war. Defeated nations. चार्ज कौन लगाएगा? Victorious nations. जो जीता वही सिकंदर. So victorious nations will frame defeated nations, और defeated nations का बॉस कौन है? जर्मनी. That you are responsible for war. So you will have to pay war damages amount, war compensation amount. तो जो नेशन पहले से वॉर में डिफीटेड है उसका बैंक अकाउंट तो ऐसे ही खाली है. ऊपर से अगर वो वॉर कंपेंसेशन अकाउंट दे देगा तो वो तो भिखमंगा हो जाएगा. मेरी बात समझ गया ना? तो यही हालत किसकी होने वाली है? जर्मनी की होने वाली है. So write this point that okay, the economic conditions of defeated nations was even more worse. The economic conditions of defeated nations was even more worse. Economic conditions of defeated nations was even more worse. Defeated nations की economic conditions क्या थी? और भी खराब थी. Because, write this, because they were forced to pay war compensation amount. Because they were forced to pay war compensation amount. उनको क्या देना पड़ा? War compensation amount देना पड़ा. They were forced to pay war compensation amount. They were forced to pay war compensation amount. Got it? Now let's discuss what is the political impact. Okay, what will be the political impact? Okay, this one. What will be the political impact? And this political impact is very important. Clear? War का political impact होगा. And the political impact will be what? Change of balance of power. ये बार बार होता है. Okay, balance of power. Write this. Balance of power. Change in balance of power. I will discuss everything, but first I am just writing here keyword change in balance of power. Political impact is right. Formation of League of Nations. Formation of League of Nations. Change of balance of power. Formation of League of Nations. Right. One more point, that the political and diplomatic identity of US becomes more prominent. The political and
diplomatic identity of US will become more prominent. Political and diplomatic identity of US will become more prominent. Why? Because US ने किस चीज की मांग की थी? एंटी इंपेरियलिज्म, एंटी कॉलोनियलिज्म, राइट्स टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, और इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा? ऑन द कॉलोनीज. द इम्पैक्ट कैन बी सीन ऑन द फ्रीडम मूवमेंट ऑन द कॉलोनीज. तो हमेशा याद रखना दैट यूएस एडवोकेटेड व्हाट? एंटी इंपेरियलिज्म, एंटी कॉलोनियलिज्म, एंटी colonialism. US advocated anti-imperialism, anti-colonialism. Plus, it also advocated for the rights of self-determination. It also advocated for the rights of self-determination for the people who were living in the colonies. जो लोग colonies में रह रहे थे उनको क्या मिलना चाहिए? Right of self-determination. It also advocated for the rights of self-determination for the people who were living in the colonies. And what will happen, right? Its effect can be seen on the colonies too. Its effects can be seen on the freedom movement of colonies. Its effect can be seen on the freedom movement of colonies also. Its effect can be seen on the freedom movement of colonies also. ठीक है, और क्या हो चुका है? तो देखो, एक इम्पैक्ट तो ये भी है. When World War was in progress in Russia, Russian Revolution took place. जो दुनिया का पहला सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन था, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना होता तो शायद ये रिवॉल्यूशन डिलेड हो जाता, बट होता जरूर. मेरी बात समझ गया ना? तो ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट हम काउंट करेंगे क्या? रशियन रिवॉल्यूशन. It will be also counted as a impact. So write this point that Russian Revolution, that was the first socialist revolution in the world. ठीक है 1917 में, but still we will count this point. Russian Revolution, that was the first socialist revolution of the world. This is also an important point. And right, next point is formation of new nations. और यूपीएससी में यही वाला टॉपिक मेंशन किया है. मेरी बात समझ गया ना? वो बहुत तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सिलेबस को मेंशन करते हैं. सिलेबस में ये वर्ड लिखा था कि नहीं? ओके, टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स, न्यू नेशनल बाउंड्रीज, क्रिएशन ऑफ न्यू नेशंस. ये तो वियना के बाद भी हो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी हो रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी हो रहा है. तो क्या हमें पूरा का पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा कि नहीं? समझना पड़ेगा ना. Nationalism, how it was a factor, okay, in the creation of new political territories or the boundaries. तो ये आपको लिखना है that right, this creation of new states, nation states, territorial adjustments and boundaries. ये मैं मैप पे बताऊंगा आपको. creation of new states, territorial adjustments and boundaries. new states, territorial adjustments and boundaries. और लास्ट में एक पॉइंट लिखोगे, दैट इज पेरिस पीस समिट 1919. पेरिस पीस समिट 1919, that will be the last point. Paris Peace Summit 1919. And in bracket you will write that it contained the seeds of Second World War. Paris Peace Summit contained what? It contained the seeds of Second World War. पेरिस पीस समिट के प्रोविजंस में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सीड्स थे. ये भी हमें समझना है. तो ये तो ऐसे हमने एक जनरल इंडिकेशन में सम पॉइंट्स में, फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग द इम्पैक्ट, तो दिस इज व्हाट इम्पैक्ट एज वेल एज सिग्निफिकेंस. व्हाट इज सिग्निफिकेंस? तो देखो, इसमें सिग्निफिकेंस का पॉइंट क्या है, ध्यान से समझो. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कुछ भी हुआ, इससे जो कॉलोनीज हैं इसमें नेशनल मूवमेंट को क्या मिला? एक थ्रस्ट मिला, एक सपोर्ट मिला, एक हेल्प मिला. मेरी बात समझ गया ना? ग्रेट ब्रिटेन की पोजीशन वीकर हुई. तो ये नेशनल मूवमेंट क्या 1922 में ही है कि आगे तक है? इट इज कंटिन्यू टिल 1947 ना. एंड इट इज ओनली द केस ऑफ इंडिया. इन अदर कॉलोनीज
The national movement will be in progress. Different countries will get independence at different time interval. ठीक है? So in this way, we will have to understand this entire concept. So when I will elaborate, you will be able to understand these concepts. Again, these are very important ideas here. ठीक है? एक बार समझना है और फिर उसके क्रक्स को दिमाग में रखना है. जैसे मैंने आपको फर्स्ट वर्ड वॉर बताने के बाद बताया कि 150 वर्ड्स में क्या कंटेंट आप लिख सकते हो, तो अब वो आप भूलोगे नहीं. बट अगर आप उसको कहीं से आप बाजार से शॉर्ट और क्रिस्प नोट खरीद के लाते कि बहुत देखने में अच्छा लग रहा है और उसको पढ़ते, तो उसको वहीं भूलते जहां एग्जैक्टली उसकी जरूरत पड़ती है आपको. एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाते हैं आप. ठीक है ना? इसीलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्टोरीज और द रीजंस बिहाइंड द इवेंट्स. ओके, सो वी कैन रिमेंबर दीज थिंग्स वेरी इजीली. अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट. कितनी चीजें हम याद रख पाएंगे? हमारे दिमाग की भी एक लिमिटेशन है. विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज वी कैन रिलेट. नाउ we are going to discuss first this topic that is called Paris Peace Settlement. Paris Peace Settlement. Okay, Paris Peace Settlement. Paris Peace. Paris Peace Settlement. Right. So Paris Peace Settlement. This is also called Paris Peace Treaty, and this treaty was signed. This treaty was signed between group of victorious nations. This treaty was signed between group of victorious nations and defeated nations. This treaty was signed between group of victorious nations and defeated nations. Okay. And why this treaty was signed? This treaty was signed to ensure long-term peace and stability in the world. That's why this is called peace settlement. So this was a settlement between, ये part clear हो गया? This was a settlement or treaty that was signed between group of victorious nations and defeated nations. Why it's called peace treaty? Because it was signed to ensure, long term, it was signed to ensure long term peace and stability in the world. It was signed to ensure long term peace and stability in world. ठीक है? दुनिया में पीस बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए साइन किया गया. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड पेरिस? बिकॉज इट वाज साइंड इन पेरिस. तो ये क्या हो गया? पेरिस पीस ट्रीटी. नाउ द कंट्रीज विच आर इन्वॉल्वड हियर, तो देखो, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो बेसिकली दिस ट्रीटी was a set of 5 treaties. When we say Paris Peace Settlement, read this. It was a set of 5 different treaties that were signed with 5 different nations. It was a set of 5 different treaties that were signed with 5 different nations. 5 different treaties were signed with 5 different nations here. So देखो, the name of treaties I am writing here, and with which country it was signed I am writing here. So the first treaty is known as Treaty of Versailles or Versailles. Treaty of Versailles. Treaty of Versailles. This is the first treaty. The second is Treaty of Saint Germain. Treaty of Saint Germain. Treaty of Saint Germain. The third is Treaty of Trianon. Treaty of Trianon. That is the third treaty. Treaty of Trianon. The fourth is Treaty of Neuilly. Treaty of Neuilly. Treaty of Neuilly. And the fourth is Treaty of Savoy. Treaty of Savoy. Treaty of Savoy. Savoy or Savoy? Treaty of Savoy or Treaty of Savoy. आपने लिखा 5 treaties. If you don't want to remember the names of these 4 treaties, you can skip. ठीक है? This first treaty was signed with Germany. The first treaty is signed with Germany, and this is the most important treaty. यही सबसे important treaty है. That is Treaty of Versailles. The first treaty was signed with Germany, and this is the most important treaty out of all these treaties. सबसे important यही है, Treaty of Versailles.
that was signed with Germany. Treaty of Saint Germain was signed with Austria. It was signed with Austria. अब ये बताओ, Germany was defeated power or not? Yes. Austria was defeated power or not? Yes. अच्छा, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर दोनों को साथ साथ लिखते हैं, तो ऑस्ट्रिया के साथ ये भी आ जाएगा हंगरी, ऑस्ट्रिया और हंगरी. ओके, so the third treaty Trianon was signed with Hungary. Treaty of Neuilly was signed with Bulgaria. Read this. It was signed with Bulgaria, and Treaty of Sèvres was signed with Turkey. Signed with Turkey. So these are 5 treaties signed with 5 different nations. First is very important, Treaty of Versailles, that was signed with Germany, because among defeated nations, which country was the most important country? Germany. So Germany is important. Looking at its importance, Paris Peace Treaty is synonymous to Treaty of Versailles. कई बार पेरिस पीस ट्रीटी के लिए लोग कौन सा वर्ड यूज कर लेते हैं? ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस. ठीक है, सो बोथ दीज टू वर्ड्स, पेरिस पीस सेटलमेंट and Treaty of Versailles, are also used as synonymous. Looking at the importance of Treaty of Versailles, इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम क्या मान लेते हैं? सिनोनिमस मान लेते हैं. नाउ यू आर फ्री नॉट टू रिमेंबर दीज ट्रीटीज, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, नोट्स में लिख लिया, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके. बट दिस ट्रीटी लास्ट वन, you can read it because you will need it to relate it in modern Indian history. Modern Indian history में इसकी जरूरत पड़ेगी, because in modern Indian history we read about a movement, and that movement is Khilafat movement, Caliphate. Indian Muslims launched a movement against British in India. And what was the issue? Because the British has announced, British were the victorious powers. They signed Treaty of Sèvres with Turkey, and British announced that in Turkey we will introduce the modern progressive system. Okay, the caliphate system will be ended. The territories will be readjusted. Now this caliphate was also the Muslim religious head of Muslims all over the world. ठीक है, तो ये ट्रीटी ऑफ सेवरेज से ही ये मुद्दा जुड़ता है. एंड लास्टली इन इंडिया वी सी व्हाट? खिलाफत मूवमेंट. सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, ये हमें जानना जरूरी है. ओके, नाउ अगेन आई एम कमिंग टू दिस ग्रुप. ओके, so there are 2 group of nations. One is the victorious nations, and here I will write important nations only. Okay, because there are other nations as well, but this, or if you read all this, will complicate this entire concept. ठीक है, तो उसमें नहीं जाना है. I will discuss new nations, but वो अलग टॉपिक में बता दूंगा. Okay, so victorious nations and defeated nations. Defeated nations, आप बताओ, हिस्ट्री में उस आदमी को कोई इज्जत मिलती है जो बीच लड़ाई से भाग जाता है? नहीं. कौन वॉर बीच में छोड़ दिया था? बताओ. दिस वॉज द ग्रुप ना, BFR, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया. ओके, इटली changed this side and joined it, and US supported later. US supported later. Now अब इसमें कहानी देखो, Italy joined this side, okay, in the expectation of getting some territories as reward. In the expectation of getting some territories as रिवॉर्ड. इटली ने ये साइड क्यों ज्वाइन किया था? इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग सम टेरिटरीज एज रिवॉर्ड. ठीक है, कि ये लग रहा है पलड़ा भारी है इनका, तो जीत जाएंगे तो हमें कुछ गिफ्ट विफ्ट, पैसा वैसा, टेरिटरी वेरिटरी मिलेगी. लेकिन इतिहास में उस आदमी को भी हिस्ट्री में रेस्पेक्ट नहीं मिलती है. दैट इज अट्रैक्टेड बाई ग्रीड. एक तो लालची आदमी को कोई इज्जत नहीं मिलती है, हम लोग भी नहीं देते हैं. देते हो क्या? ग्रीडी आदमी को कोई रेस्पेक्ट देते हो? नहीं. और जो भाग जाए आपको किसी सिचुएशन में फंसा के, उसे भी नहीं रेस्पेक्ट दोगे. तो द सेम विल हैपन हियर. विक्टोरियस नेशंस आर ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया. अच्छा, किसकी इज्जत सबसे ज्यादा होगी बताओ? यूएस. एंट्री ऑफ यूएस वाज गेम चेंजर. यूएस ने आके जितवा दिया था सबको, और यूएस डिड नॉट ज्वाइन दिस वॉर.
आउट ऑफ ग्रीड यूएस ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस एक प्रॉमिस करो कि वर्ल्ड में क्या लेके आओगे, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ोगे, लोगों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कॉलोनीज में दोगे। लोगों ने कहा यार आ गया, यही तो हीरो है, यूएस इज द मसीहा। यूएस की इमेज बन गई और इटली की इमेज खराब हो गई। ठीक है, तो इटली वॉज इन द ग्रुप ऑफ विक्टोरियस नेशंस, बट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इटली वेर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस इन पेरिस पीस समिट। इनको चाय कॉफी तक नहीं पिलाया गया, ऐसा नहीं हुआ था, बट दिस इज जस्ट ओके so that you could remember. So always remember that Italy was in the group of victorious nations, but the representatives of Italy, write this, but the representatives of Italy were not given importance, were not given importance, and their voices were overlooked. The representatives of Italy were not given importance and their voices were overlooked. तो जैसे जयकांत सिकरे का सिंघम फिल्म में ईगो हर्ट हुआ था, वैसे ही ईगो हर्ट किसका हो जाएगा, इटली का। गॉट इट, सब कुछ करने का लेकिन इटली का ईगो नहीं हर्ट करने का। यही रीजन है कि इटली में क्या आएगा, फासिज्म। इन इटली फासिज्म विल कम। जर्मनी में, जर्मनी के लोगों का भी ईगो हर्ट होगा, आगे बताऊंगा। जर्मनी में क्या आएगा, नाजिज्म। मेरी बात समझ गया ना, ये बहुत खतरनाक चीज होती है, किसी का ईगो मत हर्ट करो, सिंघम बनो उसके बाद भी, ठीक है। चलिए, नाउ व्हाट अबाउट रशिया, रशिया विल बी गिवन इंपॉर्टेंस और नॉट, कॉमन सेंस, नो। वाह भाई, खुद फंसा दिया हमें और निकल लिए, ठीक है। कहा ना, रशिया की भी बात नहीं सुननी है। हाँ ठीक है, रशिया की जो टेरिटरी जर्मनी ने जबरदस्ती कब्जा कर ली है, वो हम रशिया को वापस दिलवा देंगे, लेकिन रशिया को भी चाय वाय नहीं पिलाएंगे, ठीक है। तो रशिया को भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिला। सो राइट दिस पॉइंट, रशिया ओके was also not given importance. Russia was also not given importance. Russia was also not given, रशिया को भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। रीजन यू ऑल नो, राइट। बट ओके, द विक्टोरियस नेशंस will ask Germany, but the victorious nations will ask Germany, but the victorious nations will ask Germany, victorious nations will ask Germany to return back those territories of Russia, to return back. Victorious nations will ask Germany to return. जर्मनी तो हार गया था ना बेचारा, तो उससे जो कहोगे वो उसे करना पड़ेगा, राइट। तो victorious nations will ask Germany to return back those territories of Russia which it has previously occupied, which it has previously occupied due to Treaty of Brest-Litovsk, which it had previously occupied due to Treaty of Brest-Litovsk. Got it? Brest-Litovsk की ट्रीटी से पता ही आपको 1917 में जर्मनी घुस गया रशिया में, उसकी टेरिटरीज कब्जा कर ली। रशिया ने कहा भाई वॉर से बाहर जाने दो, हमें रख लो हमारी टेरिटरी। जब वॉर खत्म हुआ, PFR सपोर्टेड बाय यूएस, सपोर्टेड बाय आई वाज द विक्टोरियस ग्रुप। तो इतनी इज्जत रखी विक्टोरियस नेशंस ने, कहा रशिया को उसकी टेरिटरीज क्या कर दो, वापस कर दो। बट रशियाज ओपिनियन वेर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस। ये ध्यान रखना है कि इन दिस पीस ट्रीटी रशियाज ओपिनियंस वेर ओवरलुक्ड, दे वर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस, ठीक है। रही बात डिफीटेड नेशंस की, तो डिफीटेड नेशंस की वैसे भी कोई इज्जत नहीं रहेगी, ये तो पता ही है, ओके। उनसे कोई प्रोविजन डिस्कस करेगा नहीं, दे विल बी आस्क्ड टू साइन, कहा आओ जाके साइन कर दो, हमने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। हम जो कहेंगे वो क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और ये भी अच्छी बात नहीं है, मेरी बात समझ गया ना। वॉर के लिए किसी एक आदमी को, किसी एक कंट्री को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, गॉट इट। So in this peace treaty, who will be held responsible for First World War? Germany. तुम ही responsible हो, okay? So what will happen here? Write this, that the defeated nations, okay, and their opinions were also not given importance.
Defeated nations and their opinions were also not given importance. They were only invited to sign the treaty. They were only invited or called upon to sign the treaty. They were only invited or called upon sign the treaty. कहा कि ट्रीटी साइन कर दो, बस इससे ज्यादा नहीं, चाय वाय नहीं पिलाएंगे तुमको, ट्रीटी साइन करो और अपने घर जाओ. तो ओपिनियंस वर ओवरलुक्ड और नॉट, वॉइसेस वर ओवरलुक्ड और नॉट. यस. और ट्रीटी का नाम ही पीस ट्रीटी है, दैट वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी. कैसे लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी आएगी जब सबकी बात आप नहीं सुनोगे? यही प्रॉब्लम था पेरिस पीस ट्रीटी का. नाउ विच नेशंस प्लेड इंपॉर्टेंट रोल? सो राइट दिस. ओके, which nations played important role here? Okay, so here read this. The nations that played important role, the nations that played important role, okay, the nations that important played important role are known as big three. The nations that played important role in Paris Peace Summit are known as big three. अब आप बता दो बिग थ्री कौन होगा? सबसे पहले बिग बॉस पे किसको बनाते हैं हम? यूएस को. ठीक है. एंड यूएस वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स प्रेसिडेंट एंड द नेम ऑफ दिस प्रेसिडेंट वाज वुड्रो विल्सन. पेरिस पीस समिट में यूएस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? वुड्रो विल्सन. राइट. नाउ फ्रांस, बिग बिग थ्री में कौन आ जाएगा? फ्रांस. एंड फ्रांस वाज रिप्रेजेंटेड बाय George Clemenceau. France was represented by George Clemenceau. George Clemenceau. And in Big Three, the third country was Britain. The third country was Britain, and Britain was represented by Lloyd George, British Prime Minister. Woodrow Wilson, George Clemenceau, and Lloyd George. These three big countries and these three representatives of these big three countries play vital role in Paris Peace Summit. Vital role. It means in defining the provisions of this Paris Peace Treaty, they played the most important role. And the seeds of Second World War were contained in the First World War. Second World War के seeds कहाँ थे? They were contained in the First World War. Right? The seeds of Second World War were contained in the First World War. So in next class we will discuss that what were the proposals, what were the provisions, and how Second World War seeds were present in First World War. Then we will discuss that how Nazism emerged in Germany as an ideology, emergence of Hitler, emergence of Mussolini and fascism in Italy, ideological conflict during these two World War period. Again very important topic. तो ऐसे करते हुए हम कहाँ तक पहुंचेंगे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक. ठीक है. देन वी विल मूव बैक. विल डिस्कस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विल डिस्कस रशियन रिवॉल्यूशन, वी विल डिस्कस कैपिटलिज्म, सॉरी वी विल डिस्कस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म. देन इधर हम क्या पढ़ चुके रहेंगे? नाजिज्म, फासिज्म. यही तो सिलेबस था. डिफरेंट आइडियाज. तो वो डिफरेंट आइडियोलॉजी आप तब तक नहीं अच्छी तरह से समझ सकते थे जब तक कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री के इवेंट्स को नहीं जानते. मेरी बात समझ गया ना? तो विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. नोट्स को रीड इट एटलीस्ट 2 to 3 times सो दैट द इंटायर आइडियाज गेट सेटल्ड इन योर माइंड. ठीक है ना? एंड रीड एंड डिस्कस विद समवन एंड यू विल बी एबल टू रिटेन द इंफॉर्मेशन. ठीक है ना? दिस इज नॉट अ गुड आइडिया दैट यू आर रिवाइजिंग इट before all exam. No, this exam is like this. When you are appearing prelims 1 or 2 months before, you should be focused on applied portion that is based on current affairs, that's dynamic. Static आपको पहले पढ़ लेना है. When you are writing mains, so you should focus where? On applied portion, dynamic, like environmental economy, policy, programs, writing test series, practicing ethics, practicing essay. अगर आप मेंस के पहले बैठ के वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने लगे 1 महीने, फिर ऊपर वाला ही मालिक है.
हर चीज का एक स्ट्रेटजी होता है। फाउंडेशन कोर्सेज पहले पढ़ो, बाद में अप्लाइड चीजों को पढ़ो, तभी तो आप कनेक्ट कर पाओगे स्टैटिक प्लस डायनेमिक। सब आदमी स्ट्रेटजी बताने वाले ही बताते हैं ना, स्टैटिक प्लस डायनेमिक। तो स्टैटिक पढ़ाएगा कौन भैया? पहले स्टैटिक पे काम तो कर लो, देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट इट विद डायनेमिक बाय योरसेल्फ। क्लियर? ओके, चलिए, हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी वन ऑफ यू? थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम।